to approach the dais within a very short while from now. See around yourself. All the dignitary persons invited to this alumni function are just going to ascend the dais very soon. Please stand up, guys, and big hands for our honorable guests approaching the dais. The most awaited moment has come. To unite and gather the knowledge, to unite and mingle together, and to really do something for the society. That is the real motto. Before we proceed with the other announcements, I should be introducing the distinguished intellectual. We are awaiting really his precious counsels for the benefit, for the well-being of the students. You are really seeking your career in the field today. You are really marching towards a big victory, and you'll be definitely getting benefit from this great person on the dais today. And as well, we are lecturer in Sanskrit and eloquent speaker of Vedanta philosophy. And welcome, sir. We'll be very enthusiastically listen to you. Mr. Nanda, when he's very glad to really welcome you, all the old students of your career world. But with such many a time I have seen BP Sudatta and over here, it is a really Vedic chant as a great tradition. Deepam Jyoti Param Jyoti Deepam Jyoti Janardana Deepo Haratu Me Papam Deepam Jyoti Namostute Subham Karatu Kalyanam Arogyam Sukha Sampada Dosa Buddhi Vinasaya Atmajyoti Namostute Atmajyoti Pradiptaya Guru Jyoti Namostute. पंडित चाहिए सब सर
सर्टिफिकेट चाहिए as you can see. And again, Srikant Misra. I just cannot see Srikant Misra anywhere. He's not here. Unfortunately, this guy is not with ourselves. Well, Monty proceeding to the skies. Big, big hands. Join your hands together for Koel. Let me request the President of Alumni Association to address the gathering. आज मुख्य अतिथि श्रीजुक्त अनादिचरण पूर्वतन क्रीड़ा निर्देशक वर्तमान आंचलिक सबु प्रतिनिधि मानक मोर सफल उद्यम बल आज सभा आज अनुष्ठित मोर आंतरिक धन्यवाद। मैं आशा करी से भाव मत सहयोग करेंगे एमती आम आगामी भविष्य भी जमती सभा से प्रति वर्ष पालन करूँ। आम विगत वर्ष तेणुक यहाँ आम द्वितीय वार्षिक उत्सव आलुमिनी माने जी भी पाई फैसिलिटीज ताहा अन्य कौन जो नामी दामी कॉलेज टू किसी कम पाइनु। तो श्रीजुक्त शुभेंद्र पति सार उद्यम बल आम मैंने आज सब भल भल जगार अच्छा केत जन भाई मैंने इंजीनियरिंग कर प्लस 3 कैरियर सारी पीजी ट्राए कर Srijut Anadicharan Sahu, Principal of this college, Chairman of this college, sitting some more time with you after this formal inaugural is over. So I am not taking much time. I'd like to call upon our chief guest, one of very eminent speaker, very eloquent, very amazing speaker with me, Rajiv Nanda, lecturer. जगदीश्वर परम प्रभु सच्चिदानंद आनंद कंदघन श्री जगन्नाथ महाप्रभु इलाइट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एप्लिकेशन आलुमिनी एसोसिएशन मंचस्थ अतिथि मान मध्य आकर्षण प्रमुख केन्द्रबिंदु ओडिशार जड़े वरिष्ठ आदर्श पुलिस प्रशासनिक सेवाधिकारी ओडिशा क्रीड़ा विभाग पूर्वतन निर्देशक श्री अनादिचरण साहू महोदय, अन्यतम सम्माननीय अतिथि आईटीआर कॉलेज श्री शुभेंदु पति महोदय, ये अनुष्ठान अध्यापक मोर बंधु श्री नौशाद नायक महोदय तथा प्रथमतः मु कही रखा चाहे अनुष्ठान अतिथि नुह कारण महाकाल गर्भर जिते अनुष्ठान जन्म नवार योजना करुला से समय अनुष्ठान सहित अंगांगी भाव में जड़ित ये अनुष्ठान प्रति स्वतंत्र भावावेग मोर रही अनुष्ठान जो आरंभ है अनुष्ठान में शिक्षादान करी आज मुझे अनुष्ठान में शिक्षादान करूनी जिते भी सुविधा मिले सुजोग मिले मोर भावावेग अनुष्ठान सहित जड़ित हाथ छड़ा करेनि ये जो जे जिते कटक एवं भुवनेश्वर द्वैत महानगरी जहाँ एजुकेशन हब बोली कहु एक स्थान में ग्रामांचल पिला शिक्षा दवाई कम मूल्य शिक्षा दवाई का एवं रेसिडेंशियल एक गृहाभिमुखी वातावरण तैयारी करी निश्चिंत भाव में एक प्रशंसनीय उद्यम मु अनेक रेसिडेंशियल शिक्षा अनुष्ठान सहित जड़ित साधारणतः रेसिडेंशियल कॉलेज जो मैंने पढ़ती से भावती गोटे व्यावसायिक शिक्षा अनुष्ठान और से पढ़ी सारा बहु दूर दूरांतर पर्यंत से अनुष्ठान सहित ना जीवा हुए ना आसवा हुए ना कौन संपर्क रखा हुए किंतु ये अनुष्ठान पिला माने ये अनुष्ठान सामग्रिक हित दृष्टि गोटे पुरातन छात्र संसद मान को कहवाई चाहे जे शिक्षा शिक्षार उद्देश्य संपर्क में मु तुम मान को कही यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे अर्थात से सबू मनुष्य पिंड भितर अच्छी तेणु भारतीय वेदांत दर्शन कहे शिक्षार अर्थ कौन सी बाह्य ज्ञान आहरण नुह बरं आम भितर से जो ज्ञान उपर जो अज्ञानतार जो पटल पड़ी से पटल को दूरीभूत करी ज्ञान बोली कहुए
ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରେ, ସେତିକି ବେଳେ ତା ଭିତରେ କଣ ହୁଏ ନା ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ରେକ ହୁଏ। ତୁମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ନ୍ୟୁଟନ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଟନ ବସିଥିଲେ ସେ ବଗିଚାରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା? ଏ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଯୋଉ ଫଳ ପଡିଥିଲା ସେ ଫଳ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ କହେ ଯଥା ପିଣ୍ଡେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁ ଅବିକଳ ଭାବରେ ଏ ଶରୀର ରୂପୀ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ 5ଟା ମୌଳିକ ଉପାଦାନରୁ ତିଆରି ହେଇଛି ନା ଅପକ୍ଷିତ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକାର ହଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଯେ ବିଦ୍ୟାଙ୍ଗ ଅର୍ଥୟତେ ଇତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯେ ବିଦ୍ୟାକୁ ଯାଚନା କରେ, ଯେ ବିଦ୍ୟାକୁ କାମନା करे, जे विद्या अनुकूल मनोभाव को परिपोषण करे, शयने स्वपने जागरणे जे सतत विद्या आहरण पर निजकू दया क्षमा करुणा आदि मानवीय मूल्यबोध रे जे मनीष भितर प्राण प्रतिष्ठा करे, शिक्षार व्यापक प्रचार होची, प्रसार होची, पिला माने अधिकर्षण करूचु, किंतु तदनुपात रे जो मानवतार विकास संसाधन हवा कथा, जो मनीषपणियार विकास हवा कथा, से विकास संसाधन हो पारुनी। आज जो माने उच्च शिक्षित से माने सर्वाधिक अपराध प्रवणता से विद्या प्रति समर्पित कर दिए। से विद्या कौन करे तार सकल रहस्य को से पाठक निकट रे उन्मोचित कर दिए। तेणु यही धरणर विद्या आपण मानकर समस्तंकर ध्येय हो, विकास हो, पाठ तो सब जगह पढ़ा जाउची। ए अनुष्ठान पिला माने क्रमागत उत्तरोत्तर भाव में काउंसिल परीक्षा रे भल फलाफल करूचंती, आगामी दिन में मध्य करिवे। किंतु तत्सहित चारित्रिक अभिवृद्धि दिगरे आमे समस्ते यत्नवान हवा। सा विद्या जा विमुक्ते यही महामंत्र समस्त को अमृतायित करू। आजिकार ही दिवस रे समस्त को अभिनंदन शुभ वार्ता प्रदान करी मोर वाणी को विराम दउची। धन्यवाद। सा विद्या जा विमुक्तै विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रत्वं पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मो ततो सुखम। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय प्रदान करे, विनयात याति पात्रत्वम, and out of your humility it simply comes outwards. Vinayat yati patratvam, you become a figure, you become a man of personality. Patratvat dhanam apnoti, you become a fabulous figure, you become one eminent figure, you are one adorable figure in the society, so you will get to the world of the wealth. Dhanat dharmo tato sukham, and out of wealth you will get great pleasure of myself to announce that the most awaited moment has come. The chief guest of सारस्वत श्रेष्ठ पुलिस प्रशासन दक्ष अधिकारी संस्कृति संपन्न व्यक्तित्व भावे श्री अनादि साहू सुपरिचित। आपण माने समस्त जानते। This man needs no introduction as well. When I was a schoolboy, I also knew something about that. Some Mr. Nadi Sahu, the great police officer, done wonderful piece of work, headed somewhere, and always he was in that of media. Visual media was not exactly up to that extreme, but still in the print media he was a prominent figure. Lok Sabha पूर्वतन सांसद श्री साहू तांकर कर्ममय जीवन रे अनेक दिगंत को स्पर्श करिसंती, अनेक चक्रवाळ को। वरिष्ठ कथाकार भावे ओडिया उपन्यास, क्षुद्र गल्प और रम्य रचना तांक लेखनी रे समृद्ध होईछि। जंगली सिठारू दिल्ली पर्यंत दृश्य सुंदर भाव रे वर्णना करिसंती श्री साहू। कटक और ब्रह्मपुर लोकसभा आसनरु संसद रे प्रतिनिधित्व करुथिबा श्री साहू जीवन को अति निकटरू जानिबार प्रयास करिसंती। पुलिस विभाग रे उच्च पदाधिकारी भावे से कार्य करुथिबा बेले ओडिसार विभिन्न क्षेत्र quite a very versatile figure and a great genius amid us. Mr. Sahu, welcome to the podium, please, sir. A few beautiful words about me. Friends, I call everybody a friend, and young students. I find that they are looking at me with an inquisitive eyes. Quite natural. They must know who this character is. I was not making any obeisance. I was only lighting the lamp as a ritual.
but I do not believe in any sort of idolatry or any religion. Why I tell these things? Because we have been taught in the Vedas that you need not think of God. You need not face somebody saying that he has got Godhood. You have Godhood, everybody has Godhood. A good thing in life is Godhood. Now, speaking about the life and all those things, I was reminded of the Dasarjani Sukta in Rigved, 7th Manda. What did they do? Sindhu area and conquered that area with their priest as the guide. Sudas, you must have heard of the name Sudas, Devodas, all these people.